Shubham, are you there? Alex, are you there? आई थिंक मेरे दोस्त लोग नहीं आए, वो लोग पढ़ाई कर रहे। 5:30 हो गया ना। Are you there, Alex? Alex, are you there? Shubham, are you there? But you are not Shubham. You are not Alex. You are... I don't know. I don't know you. Where are my friends? Nobody. Nobody is group. Hi, Mintu Gaming. Mintu Gaming.
आपके दरसाई हो। दरसाई मतलब दरसाई का क्या मतलब होता है? आप किधर से हो? मैं सिक्किम से हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग क्यों नहीं आए, एलेक्स और शुभम? ये दोनों कहाँ गए, एलेक्स और शुभम? इसी शायद डिस्कॉर्ड से पढ़ रहे हो कि कोई बात नहीं, वो लोगों को पढ़ने देते हैं ना, हम लोग यहीं पढ़ते हैं। Fungal association in root in the form of mycorrhiza, pinus and fungi. Pinus root of pinus and fungi. Mycorrhiza. शुभम कितना लेट आया? मैं तो ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी, क्योंकि एलेक्स भी नहीं था, शुभम भी नहीं था। पता नहीं कौन लोग ना, इतने सारे लोग आ गए अचानक, मैं तुम लोगों को बुलाते रही।
कितना ऑकवर्ड लगा। यही अच्छा है ना, जब हम सब फ्रेंड्स लोग होते हैं और बाकी के लोग नहीं होते। बहुत सारे लोग लेकिन कोई पहचानने वाला नहीं होता ना, तो बहुत ऑकवर्ड लग जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ना बहुत सारे लोग आ गए ना, लेकिन मैं किसी को भी नहीं जानती थी, वो बस इससे मुझे लग रहा था कि वो देख रहे हैं। नो बकवास मतलब, नो बकवास मतलब निधि के बारे में ना बोलूं। नो बकवास मतलब, नो बकवास मतलब क्या? ओ मतलब जब वी फ्रेंड्स आर देयर देन नो बकवास। जब वी फ्रेंड्स आर देयर तब तो हम लोग बकवास कर सकते हैं, जब बाकी लोग आ जाते हैं तब नहीं कर सकते ना। व्हाट आर यू स्टडिंग? प्लांट किंगडम पढ़ रही हूँ। अर्नव, अर्नव, वाओ अच्छा नाम है। तो यहाँ पर भी है एक, लेकिन वो अर्नव, अर्नव राय है शायद, अर्नव राय। एंड ही इज क्रिश्चियन मुझे, बट आई डोंट थिंक यू आर क्रिश्चियन। मैंने तिवारी देखा। ओ हाँ, बाहर वाले ज़्यादा बकवास करते हैं, वो तो सही है। सिद्धांत चल रहा है अब यूट्यूब पे। नहीं कोई बात नहीं, लिखने दो ना शुभम, डोंट डिलीट इट। सिद्धांत भूटूरिया, भूटूरिया, भूतोरिया, छोले भटूरे आ गया था। हाय भटूरे, हाय सिद्धांत भटूरे, छोले भटूरे। शुभम भी एलेक्स से सीख रहा है, बिना कुछ समझे ही टाइम आउट दे दे रहा है बेचारे लोगों को। छोले भटूरे ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन टाइम आउट दे दिया तुमने। अर्नव अच्छा नाम है ना अर्नव, कि अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अर्नव और आर्नव, यहाँ पर जो है ना उसका भी स्पेलिंग यही है, लेकिन उसे प्रोनाउंस ऐसे करते हैं आर्नव। ओहो, आई आर्नव की तो ना पिक्चर भी काफी कूल है। शुभम जाके देख लो ना, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी बॉडी बनाने की। देखा, वो ये चला नहीं गया है, मुझे लगा अर्नव लेफ्ट। ओ तारीफ हो गई। खुद की तारीफ सुन के खुशी मना रहा है। मुझे लगा कि अर्नव चला गया है ना, इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन वो खुद की तारीफ सुन के खुश हो रहा था। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी एलेक्स का कुछ तारीफ करती हूँ एलेक्स वापस आ जाता है ना, वही वाला हो गया है तो। वैसे एलेक्स आया नहीं अभी तक, पढ़ाई कर रहा होगा ना। एलेक्स आर यू देयर? नहीं आया है एलेक्स शायद। हम लोग पढ़ते ओके। मैं 22 मिनट का सेट करूँ, 23 का करती हूँ ना, क्योंकि तब 23 मिनट ही लेफ्ट था, छोड़ के गई थी ना। वैसे ये कौन सा स्लॉट था शुभम? वो लिख दो, मैं पिन कर देती हूँ। मिनट रिमेनिंग। ओके, थैंक यू शुभम लिख देने के लिए। वैसे आप एलेक्स मुझे नहीं देगा ना क्लोवर लीफ? एलेक्स तुम हो तो क्लोवर लीफ सेंड कर दो, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ना।
डू यू स्टडी विद मी टाइप ऑफ लाइफ? हाँ, काइंडा कह सकते हैं, लेकिन उसमें ना वो लोग एकदम ही क्या होते हैं, बहुत ही पढ़ाकू लोग होते हैं ना, हम लोग इतना नहीं पढ़ते। और जैसे हम लोग में जो पढ़ते हैं ना, वो उन लोगों को मैं जानती हूँ। जैसे शुभम कंटिन्यूअसली पढ़ता है, तो मैं शुभम को जानती हूँ, एलेक्स को जानती हूँ, भवा को जानती हूँ, निधि को जानती हूँ। जो पढ़ते हैं ना हम लोगों के साथ, अनिकेत भी आ गया है अब तो उन लोगों को हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन एक दूसरा का रूटीन पता होता है हम लोगों को कि हाँ इतना इतना पढ़ते हैं हम लोग, तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं। मैं ना वो ऑफ कर देती हूँ, चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ। शुभम, एलेक्स तुम हो तो ना वो भेज दो, क्लोवर लीफ। ओ शुभम ने ही भेज दिया। एलेक्स तुम्हारा प्लेस ले रहा है शुभम, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू शुभम। सिलेबस हो गया, आहा नहीं, स्पेशली रिवीजन कर रही हूँ अब तो मैं, सिलेबस के पीछे भाग भी नहीं रही हूँ। फिजिक्स का काफ़ी छूटा है, बाकी का थोड़ा थोड़ा हो रहा है। केमिस्ट्री का थोड़ा बचा है, बायो का हो गया है, लेकिन रिवाइज करना है। यप ऑफ कर दो। ओके ऑफ कर दे रही। मैंने वेट किया एलेक्स का, मैंने भी तो वेट किया। मैं भी तो चाहती हूँ कि एलेक्स ही सेंड करे, लेकिन वो नहीं है। थैंक यू शुभम, तुमने सेंड किया। थैंक यू शैलेश। एलेक्स तुम हो तो जल्दी भेज दो, मैं काउंट कर रही हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9, टिक टिक 10। अच्छा ओके, एलेक्स इज नॉट देयर। मैं ऑफ कर दे रही फिर। अब पढ़ते हैं 23 मिनट, शायद 23 मिनट। हाँ Naked said, Gymnosperm, Naked said, the gymnos, naked sperma seed are plants in which the ovules are not enclosed by any other wall and remain exposed both before and after fertilization. The gymnos means naked, sperma means seed, are plants in which the ovules are not enclosed by an ovarian wall. Okay, they are naked seed. Ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. Both before and after fertilization. The seed that develops post fertilization are not, the seed that develop post fertilization are not covered, that is naked. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, the giant red tree, sequoia, sequoia, the giant redwood tree, sequoia is one of the tallest tree species. The roots are generally taproot. Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza pinus, while in some other cycads, small specialized root called coralloid, coralloids root are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. The stems are unbranched cycas or branched pinus. Okay, cycas are unbranched, pinus and cedrus are branched. Gymnosperm that are branched, pinus and cedrus. Unbranched cycas, pinus and cedrus. One of the gymnosperm, redwood redwood tree. Sequoia is one of the tallest tree species. The roots are generally taproot. The roots are generally taproots. Root in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza or pinus. Fungal association. Fungal association in the form of mycorrhiza pinus.
while in some other cycas, small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen-fixing bacteria. Nitrogen-fixing bacteria, root nostoc and anabina for heterocyst, nitrobacter and nitrosomonas. Nitrosomonas. Anti-fixing bacteria. Okay. Coralloid roots. Okay. Root in some genera have fungal association. Mycorrhiza pinus, while other cycas. Coralloid roots are associated with nitrogen fixing coralloid roots. Okay, cycas, coralloid roots, sequoia, redwood, giant redwood. The stems are unbranched, cycas, branched, pinus, and cedrus. The leaves may be simple or compound. In cycas, the leaves may be simple or compound. Leaves simple when you so compound when you the leaves may be simple or compound. In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature. The leaves may be simple or compound. Leaves may be simple or compound leaves. Cycas, the pinnately leaves persist for a few years. Cycas, pinnate leaves. In leaves, the leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle-like leaves reduces the surface area. The thick cuticle and sunken stomata. Thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. Thick cuticle and sunken stomata helps to reduce water loss. Helps to reduce water loss. In conifers, needle like leaves reduce the surface area. Okay. Temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle like leaves reduces the surface area. Cycas pinnate. Okay, conifers को leaf के बारे में मैंने कहा. The gymnosperm are heterosporous, produce haploid microspores and megaspore. Haploid microspore, haploid megaspore. Gymnosperm are heterosporous. Heterospory is considered important in the development of seed habitat. Seed habitat. Okay, heterospory is considered important in the development of seed habitat. The gymnosperm are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. The gymnosperm are heterosporous. Gymnosperm are heterosporous. They produce haploid microspore and haploid megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophylls. The two kinds of spores are produced within sporangia. Spores are produced within sporangia. They are borne on sporophylls. They are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form lacs or compact strobili or cones. The two kinds of spores are produced within sporangia. Sporangia are borne on sporophylls. Sporophylls which are arranged spirally. Along an axis to form lacs or compact. Okay, which are arranged spirally along an axis to form lacs or compact strobili. Compact strobili or cones. Lacs or compact strobili or cones. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia. The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. Male strobili or microsporangiate
microsporophylls, microsporangia, microsporophylls, microsporangiate or male strobili or male strobili. The microspores developed into a male gametophytic generation which is highly reduced. These microspores develop into a male gametophytic generation. Develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. The microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. Spores develop into a male gametophytic generation which are highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called a pollen grain. Okay. Male strobili. Microspore develop into the male gametophytic generation which is highly reduced. Microspore develop into male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. Reduced male gametophyte is pollen grain. Inside pollen grain there is microspores. Microspores are present inside the pollen grain. Microspores are present inside the pollen grain. Microspores are present inside the pollen grain. Okay. The development of pollen grain takes place within the microsporangia. The development of pollen grain takes place within the microsporangia. The cones bearing megasporophylls with ovules or megasporangia. Megasporophylls with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. The male and female cones or strobili may be borne on the same tree, pinus. In pinus, both male and female strobili are present. However, in cycas, male cones and megasporophylls are borne on different trees. In cycas, male and female microsporophylls and megasporophylls are present on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. Okay. Megaspore mother cell, that is MMC. Megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes. The nucellus is protected by megaspore mother cell. MMC is differentiated from one of the cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called ovule. Okay, nucellus is protected by envelope and the composite structure is called an ovule. The ovules are borne on megasporophylls. The ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form the female cone. Ovules are borne on megasporophylls which may be clustered to form female cone. The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. One of the megaspores enclosed within the megasporangium nucellus develops into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. Okay. They remain within the sporangia, written on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of the ovule borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gamete grows towards archegonia in the ovule and discharges their content near the mouth of the archegonia in the ovule and discharges their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovule into seed. Zygote develops into embryo
Zygote develops into an embryo and the ovules into seed. These seeds are not covered. Okay, zygote develops into embryo and ovules into seed. Zygote embryo unsa, ovule seed unsa, ovule unsa. These seeds are not covered. Gymnosperm, cycas, pinus, and zinco. Zinco. Zinco is living fossil. Ginkgo and cycas living fossil. Zinco biloba, oldest living fossil connecting link between cycads and conifers. Cycads and conifer. Cycas, living fossils. Living fossils. Angiosperm resembles gymnosperm in presence of ovules. Angiosperm resembles gymnosperm in presence of ovule. Unlike the gymnosperms, where the ovules are naked, in the angiosperm or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in a specialized structure called flowers. Pollen grain and ovules are developed in the specialized structure called flowers. In angiosperm, the seeds are enclosed by fruits. In angiosperm, the seeds are enclosed by fruits, and pollen grain and ovules are developed in flower. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from tiny, almost microscopic angiosperm wolfia, or to tall trees of eucalyptus, tall trees of eucalyptus over 100 meters. Microscopic wolfia and tall trees like eucalyptus. This giant redwood tree, sequoia, is one of the tallest tree species. Okay, one of the tallest. Sequoia is one of the tallest. Okay, eucalyptus is angiosperm. Sequoia is gymnosperm. They provide us with food, fodder, fuel, medicines, and several other commercially important products. They are divided into two classes, the dicotyledons and the monocotyledons. Okay, angiosperm is divided into two classes, monocotyledons and dicotyledons. Angiosperm is divided into two classes, dicotyledons and monocotyledons. The dicotyledons are characterized by having two cotyledons. The dicotyledons are characterized by having two cotyledons in their seed, while the monocotyledons have only one. Two cotyledons in dicotyledons, whereas one single cotyledon in monocotyledons. The male sex organ in flower is the stamen. Male sex organ in flower is stamen. Male sex organ, stamen. Each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip. The anthers, following meiosis, produce pollen grain. Anther, meiosis, pollen grain. Anther following meiosis produce pollen grain. The female sex organ in a flower is pistil. Male sex organ, stamen. Female sex organ, pistil. Or the carpel. Pistil and carpel is same. Pistil consists of an ovary enclosing one to many ovules. Okay, angiosperma, ovary enclosing one to many ovules. Within ovules are present highly reduced female gametophyte. Within ovules are present highly reduced female gametophyte termed embryo sac. Highly reduced female gametophyte termed embryo sac. The embryo sac formation is preceded by meiosis. Pistil consists of ovary enclosing one or many ovules. Within ovules are present highly reduced female gametophyte termed embryo sac. Okay, within ovules are present highly reduced female gametophyte called female gametophyte is embryo. Male gametophyte is pollen grain. Female gametophyte embryo sac. The embryo sac formation is preceded by meiosis. Embryo sac formation is preceded by meiosis. Hence, each of the cells of embryo sac is haploid. The cells of embryo sac is haploid because the formation
is through meiosis. The formation of female gametophyte occurred through meiosis. Each cells of embryo sac. Each cell of an embryo sac is haploid. Each embryo sac has three-celled egg apparatus. Each embryo sac has a three-celled egg apparatus, one egg cell and two synergids, three antipodal cells and two polar nuclei. One egg cell, two synergids, three antipodal cells and two polar nuclei. The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. Polar nuclei fuse together to produce diploid secondary nucleus. Pollen grains disperse. Pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil. Pollination. The pollen grain germinates on the stigma and the resulting pollen tube grows through the tissue of stigma and style and reach the ovule. The pollen tube enters the embryo sac where two male gametes are discharged. Two male gametes are discharged in embryo sac. The pollen tube enters the embryo sac where two male gametes are discharged. One of the male gamete fuses with egg to form a zygote, syngamy. Syngamy, fusion of male gamete with egg cell, with egg. Okay, fusion of male gamete with egg cell to form zygote is known as syngamy. The other male gamete fuses with the nucleus, diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm. The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus pen. Primary endosperm nucleus. Male gamete, fusion of male gamete with diploid diploid nuclei, polar nuclei, secondary nucleus, diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus. Primary endosperm nucleus pen, triploid primary endosperm nucleus. Because of the involvement of two fusion, this event is termed as double fertilization. And syngamy and fusion of male gamete with diploid secondary nucleus, triploid primary, and formation of triploid primary endosperm nucleus pen. Double fertilization. An an event unique to angiosperm. An event unique to angiosperm. Like a unique event, okay? The zygote develops into an embryo with one or two cotyledons, and pen develops into endosperm, which provide nourishment to the developing embryo. Pen develops into endosperm. Pen develops into endosperm, which provide nourishment to the developing embryo. The synergids and antipodal degenerate after fertilization. Pen develops into endosperm. Pen develops into endosperm and provide nourishment to the developing embryo. Pen develops into endosperm, which provides nourishment to the developing embryo. The synergids and antipodal degenerate after fertilization. During these events, the ovules develop into seed and the ovaries develop into fruit. The life cycle of an angiosperm is shown in figure 3.6. Life cycle of an angiosperm. Okay. Synergids and antipodal degenerate. The synergid and antipodal degenerate after fertilization. Pen develops into endosperm. Zygote develops into embryo. Synergid and antipodal degenerate after fertilization. During this event, the ovule develop into seed. Ovary into fruit. The life cycle of angiosperm. Okay. This is sporophytic 2n generation and gametophytic n generation. Sporophytic 2n generation, gametophytic n generation. Sporophytic generation and gametophytic generation. Both sporophytic and gametophytic generation are present in angiosperm. Both sporophytic and gametophytic generation are present in angiosperm. Sporophyte. Stigma. Style. Ovary. Stigma, style, ovary. Anther. Filament. Megaspore mother cell.
माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस मियोसिस को थ्रू बट माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम मियोसिस माइक्रोस्पोर ओवेरी, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, मेगास्पोर मदर सेल एग, ओके, माइक्रोस्पोर pollen grain egg gamete male gamete, zygote formation embryo sporophyte, megasporangium break sporophyte embryo sporophyte, this is sporophyte, okay, फीमेल को स्टिग्मा कार्पेल स्टाइल ओवेरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी कार्पेल, ओके, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोरेंजियम एग प्रोड्यूस हुन्छ, एन्थोफिलामेन्ट, माइक्रोस्पोरेंजियम मियोसिसबाट के गर्छ, माइक्रोस्पोर प्रोड्युस गर्छ, माइक्रोस्पोरेंजियम मियोसिसबाट माइक्रोस्पोर प्रोड्युस गर्छ, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर के हो, पोलन ग्रेन हो, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम मियोसिस, माइक्रोस्पोर मियोसिस पोलन ग्रेन, मेल ग्यामेटोफाइट पोलन ग्रेन, ओके, टु ग्यामेट्स एक सेलसँग एउटा फ्युज भएर एकसँग फेल भएर जाइगोट बनिन्छ, त्यहाँ जाइगोट एम्ब्रियो बनिन्छ, sporophytic generation and gametophytic generation, both sporophytic and gametophytic generation. कोई ब्रेक लिख दो शुभम, ब्रेक लिख दो, मैं पिन कर दूंगी. इसमें तो ज्यादा नहीं दिया है, इतना ही दिया है, मोनोकॉटिलेडन्स. हाँ तो ये वाला एडिशनल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मुझे नहीं पता. न्यू बुक में ना काफ़ी सारा वो नहीं दिया है, लेकिन क्या करूँ, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया है ना. रिप्लेस पिन मैसेज. 10 मिनट का करेंगे ब्रेक, फिर पढ़ेंगे. दस मिनट का ब्रेक, ओके शुभम. 11 मिनट ही हो गया वैसे, कोई बात नहीं, हमने 1 मिनट ज़्यादा भी तो पढ़ा था. मैं ये अम्मा को दे देती हूँ, है ना, मेरा पेट भर गया ना इसलिए.
कुट्टियों
कर लिया प्रेयर। नो हम लोगों ने क्लास भी तो लिया। कहाँ, इतना नहीं पढ़ा घोल। किसी को नहीं पता है क्या, एक अमंग अस नाम से ना एक गेम है, और उस गेम में ना एक ये भी कैरेक्टर होता है गॉल, और गॉल को ये करना होता है कि कोई इम्पोस्टर उस क्रूमेट को मार दे ना, तो गॉल को जाके उसे खाना होता है। अगर वो 2 डेड बॉडी खा जाए तो वो जीत जाता है, गॉल जीत जाता है। किसी ने खेला है क्या? अमंग अस नहीं, शायद सुपर सस है उस गेम का नाम। तुमने तो नहीं खेला होगा शुभम। आई एम प्रीटी श्योर बाकी 8 लोगों में से कोई खेल सकता है, लेकिन शुभम ने नहीं खेला, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। अमंग अस, वो अमंग अस खेला है। हाँ मुझे भी पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब ना अमंग अस का ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं है ना, और आई थिंक अब हम लोग ना वहाँ पर बात भी नहीं कर सकते अमंग अस में। मेरा भाई बोल रहा था नामशांग, बट समझ नहीं आया कुछ गेम। ओ समझ नहीं आया, काफ़ी अच्छा है अमंग अस। ऐसा होता है 10 लोग होते हैं ना, उसमें से 2 वैसे सुपर सॉस में तो इंक्रीज भी कर सकते हैं प्लेयर। अमंग अस में 10 प्लेयर होता है, उसमें से 2 इम्पोस्टर होता है। वो इम्पोस्टर को ना क्रूमेट को मारना होता है, और क्रूमेट को सिर्फ टास्क करना होता है। दैट्स इट। हाय श्रीकर। अगर क्रूमेट ने अपना सारे क्रूमेट ने, जैसे रिमेनिंग 8 में जो मर गया, लेकिन रिमेनिंग वाला ने अपना टास्क कंप्लीट किया ना, तो जीत जाएगा क्रूमेट। अगर इम्पोस्टर ने सबको मार दिया तो इम्पोस्टर जीत जाएगा। और एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम लोग, क्रूमेट भी। इम्पोस्टर को भी कर सकते हैं, अगर गलत वोटिंग किया तो क्रूमेट को भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। ये तो अमंग अस का कॉपी लग रहा है समवॉट। अमंग अस का ही बता रही हूँ। और सुपर सस, हाँ तो अमंग अस की तो कॉपी है, लेकिन अमंग अस से बेटर है। शिखर धवन, शेखर धवन हमारे बीच आ गए हैं। हमने आपकी कितनी इंतज़ार की है, आप लेट आए हैं। My mother is asking कि why are you making that noise from your mouth, kind of sound noise. मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रही हूँ। I think break is over. नहीं, ये बज देगा नहीं क्या? अभी भी 6 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1 0। ब्रेक ओवर नहीं था, लेकिन इसने ब्रेक का नाम लिया ना, इसलिए ब्रेक वो देखो तो खत्म हो गया। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। कल से टाइम पे आऊँगा। वो मैंने श्रीकर को नहीं बोला। श्रीकर मैंने आपको नहीं बोला, लेकिन आप आएंगे तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने एलेक्स को बोला। उसको हमेशा मुझे क्लोवर लीफ देना होता है ना हर सेशन के पहले, तो वो नहीं आया, लेकिन शुभम ने दे दिया। लेकिन शुभम ने इंतज़ार किया एलेक्स का कि वो सेंड करेगा, और मैंने भी एलेक्स का ही इंतज़ार किया। 50 मिनट, ओके। कौन सा स्लॉट है? स्लॉट 5 ना, SLOT स्लॉट। ओह वेयर इज इट? स्लॉट 5, ये 5 ही है ना, स्लॉट 5। 50 मिनट। Start. Okay. Now study with us, Shrikar. वैसे each slot duration 50 minutes. वैसे नहीं, वर्ड्स लिखा था। Yup, you are right, Gol. 10 minute break. One session is equals to 50 minute. पहले वाला तो हम लोगों ने रिमेनिंग वाला कंप्लीट किया।
ये फिर से भाग गया क्या एलेक्स? ओह नहीं, उसने भेजा तो है यार, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आया है, यहाँ पर नहीं आया, पीसी पे नहीं आया है तुम्हारा वाला ये स्टिकर्स। एक मिनट, ये मैं फिर से वो कर देती हूँ, लाइव चैट में कर देती हूँ, शायद आएगा। हाँ अब आ गया। वैसे ऑड नंबर में क्यों भेज रहे हो, इवन नंबर में क्यों नहीं? भेजना भी है और मैं इतना क्वेश्चन भी पूछती हूँ। थैंक यू एलेक्स। एलेक्स ने भेज दिया मेरा क्लोवर लीफ, तो अब सेशन स्टार्ट करूँगी। ये ऑफ कर दे रही हो क्या? ओके शुभम। drastically reduce, is it due to my network or yours? Maybe mine. I don't know, ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो सिर्फ शुभम ही बता सकता है और एलेक्स ही बता सकता है कि क्वालिटी क्यों रिड्यूस हो रहा है, उन लोगों के पास भी हो रहा है या फिर नहीं। एक मिनट, मैं ना अपना 720 करके देखती हूँ। आप 12th में हो क्या? नहीं, मैं 12th में नहीं हूँ, मैं तो ड्रॉपर हूँ ना, कैसे 12th में हो सकती हूँ? पता नहीं इसकी फेट कहाँ तक है, क्या है पता, हमें भी नहीं पता ना। सोनी गुलिया, सोनी गुलिया, oh she is a doctor, nice. नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको सॉन्ग्स, कॉमेडी, व्लॉग्स सब मिलेगा, बस आप सबको सपोर्ट चाहिए। कि तो सी इज़ नॉट अ डॉक्टर, सीम्स लाइक सी इज। क्या खाना स्पेशली? व्हाट इज इट? दिखने में तो वो स्टेथोस्कोप है। मैं ऑफ कर दे रही हूँ कि इसको भी थोड़ी देर के लिए।
मैं ना अभी जाके बाद में आती हूँ. हाँ, Shubham, are you there? I'll go, okay? Just type yes and I'll go away. Who is there? Shubham, and who else is there? I'll go away. Who's there? Shubham, are you there? ये भी नहीं होगा. Bye. I don't use Instagram. Hell gaming.